Hello, welcome back to my channel. Myself Bishwajit. So, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ରେ क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 जाके डिस्कशन करथिले जो CPET 2024 रो क्वेश्चन को फिजिक्स क्वेश्चन. सो एई भिडियो रे आमे ता परवर्ती 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिवा. सो फर्स्ट क्वेश्चन अछि ए वेव propagates in the surface of liquid having density rho, surface tension T, lambda is the wavelength of wave, G is the acceleration due to gravity, then speed of the wave केते हो. So এটা directly মনে রাখি দেওয়া থিওরিটা. So option B 2 pi T by rho into lambda plus G lambda by 2 pi to the whole to the square. So second question कहला electromagnetic wave propagating along the positive z axis, positive z direction. Okay. So which of the following is the unit vector along the z electric field E and magnetic field B respectively associated with electromagnetic wave? So electromagnetic wave रो formula जदि हमें लिखिवा electric field या magnetic field term रे ताई जो E cross B. So हमें एटा गोटे गोटे ऑप्शन ने की चूज करके ठीक कर दवा कोडा E सहित कनेक्ट हो. सो जदि हमें फर्स्ट ऑप्शन B को कथा कंसीडर करिवा एटा को हमें सिलेक्ट करले I into J K कैप. सो एटा y एक्सिस y कैप अछि माने ओइटा हो गेला 1 ये 0 0. सो देन ए जो x एक्सिस 1 0 0. सो एटा जदि हमें कंसीडर करिवा सो ये गला I0 हो जो J0 वेक्टर हो जो k रे हो कोन ना k into 0 minus 1. सो व्हिच इज माइनस k वेक्टर. सो ये कौन गला ना नेगेटिव z डायरेक्शन नहीं गला बट क्वेश्चन ने देछि हमर पॉजिटिव z डायरेक्शन होबा कथा. सो ये भूल गला. सो एबे हम ऑप्शन 8 ने की चूज करिवा. सो से डिटो सेही प्रोसेस रे ऑप्शन ए को चूज करिवा. सो ऑप्शन ए लिखिला कोन ना फर्स्ट क्वेश्चन लिखि जी x cap minus y cap divided by root 2 and another one is देखिए x cap plus y cap divided by root 2. सो एटा को हमें से जो i j k क्या हिसाब रे देखिवा e cross b वेक्टर रे. ओके. सो ये गला लेट i cap j cap k cap. सो ये जो फर्स्ट रा जो 1 minus 1. ओके 1 by root 2 गोटे रहिला एटा बाहर लिखि दो 1 by root 2 बाहर रखि दो minus 1 into k vector नाइ 0. सो सेकंड r मध्ये गोटे 1 by root 2 रहिला एटा 1 by root 2 अछि. सो एटा आइगला 1 by root 2. सो ये जो केते सिमिलरली 1 1 0. सो आकु जदि हमें सॉल्व करिवा 1 by root 2 into 1 by root 2 ये गला 1 by 2 into I cap into ये बोथ 0 हो गला. सो into 0 minus j cap रे कोन हिजबो ये भी 0 हो हिजबो. सो into 0 plus k cap रे कोन हबो I 1 into 1 1 minus 1 into minus 1 minus 1. सो एटा को हम एमति लिखि परिबा 1 by 2 whole into k ये 1 1 2 हिजो. सो 2 k cap. सो 2 2 कैंसिल आउट हिजो ये हिजो k cap. सो एटा हमर आंसर हे गला k cap पॉजिटिव z डायरेक्शन. सो व्हिच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जदि सेही भलिया भाबरे हम ऑप्शन सी को धरिबा ये मध्ये भूल हिजो. ऑप्शन डी को नेले ये मध्ये भूल हिजो. ओके सेवडा चेक करि परिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू डिवेस थ्योरी the molar specific heat at constant volume for a non-conducting solid is proportional to. So এটা डायरेक्ट आंसर मन रखि दे परिबा TQ T to the power 3 को सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए तार फार्मूला हिसाब रे हम चेक करि परिबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. an ideal classical monoatomic gas at absolute temperature average kinetic energy per atom. सेटा देखि हम देखियो आर फार्मूला ये जो F/2 kT. सो F कोन ना F हे गला डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो मोनो एटॉमिक गैस रो डिग्री ऑफ फ्रीडम बा F केते हो 3 हो. सो एटी हमें जेटा पुट कर दबा ये गला 3/2 kT. सो व्हिच इज ऑप्शन ए. 34 क्वेश्चन ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी एटा केते हो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी रिलेशन डायरेक्टली मन रख दे परियो. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके Vg equal to V phase difference minus lambda into V phase difference by d lambda. सर मते डेरिवेशन अछि चाहिले करि परियो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला इन AC circuit capacitor C resistor having resistance R inductor जावी थिला L connected in series.
So omega is the resonant angular frequency of AC circuit. So first जदि आमे देखिबा impedance केते हबो ना impedance रो formula है जो Z is equal to, so Z is equal to ये गला R square plus XL minus XC रो whole square root over. So ये गला impedance रो formula. But at resonant angular frequency, so resonant angular frequency रो condition है कौन ना XL is equal to XC सहित समान हो. So यदि XL XC सहित समान है गला, so ए पार्ट टा है गला 0. So Z is equal to R square root over सहित R, so which is Z equal to R. So which is 36 question number C. Okay, next question जो है 37. 37 पचारिला the correct relation of pressure, volume, temperature and entropy, internal energy U and Gibbs function. ଭିତରେ correct relation ଟା କଣ ହବ? So ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି Gibbs function ଟା କଣ ନା G is equal to H minus Ts. So H कौन ना Helmholtz free energy. Helmholtz free energy. Okay. So H रे value केते हबो ना Helmholtz free energy हमें जानी चंदी. Sorry, H रे value Helmholtz free energy रे value ये गला U plus PV. U गला internal energy, P pressure and V volume. So एटा को एटी put कर देले G is equal to U plus PV minus Ts. So which is option A is the correct answer. Okay, clear? Your next question 38. If Z is equal to X plus IY of a complex variable and f of Z is analytical function, if the imaginary part, that means आमे जदि एटा को एभलिया भाबरे लेखिबा, क्लियर? सो एटा को धीरे धीरे सॉल्व करिबा. सो देजि मु एटा को लेखिबी f of Z केते हे गला. Z is the function of x and y both, u x and y plus I v into x and y. So imaginary जो एटा हला imaginary function बा complex function, एटा हला real function. So imaginary function टा देई देजी v रे वैल्यू टा केते देई देजी ना y square minus x square. So हमको पार्ट को बाहर करिया अछि रियल पार्ट टा केते हबो बा u केते हबो. So आकु हमें सॉल्व करिवा. So गोटे नेक्स्ट पेज बाहर कर दवा. So एठी सॉल्व करिवा. ओके. सो से देई देइथिला जहा जहा हमें तो लिखि दिले. सो v देई देजी केते ना v देइची y square minus x square. सो हमको u बाहर करिया अछि. सो आमे गोटे कचस रे मान इक्वेशन जानि चंती CR इक्वेशन हिसाब रे. सो फार्मूला गोटे जानि चंती d del u by del x is equal to del v by del y. गोटे first one, and second equation is del u by del y is equal to minus del v by del x. So एटा को हमें जानि चंती. सो एबे हमें कोन करिवा ना सॉल्व करिया गोटे बाय गोटे, जोटा कि u रो वैल्यू जानिबा पाई. So u रो वैल्यू जानिया पाई u both function of x and y हबो. So u both function of x and y. So एटा को मु लिखि परिमी. So एटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे जिनानी du equal to मु एटा एमिति लिखि परिम du by dx into dx. Okay, plus du by dy into dy. So एबे du by dx जगह रे मु एटा बाहर करछि, एटा पुट कर दे परिबी del v by del x into dx, sorry del v by del y plus, sorry এটা minus is del u by del y रा value minus dv by dx. So এটা मु এটা डायरेक्ट लिखि दउ minus dv by dx into dy. ओके. सो एबे एटु v रे वैल्यू जानि छु y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर तार y रे जे हम डेरिवेटिव बाहर करिवा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एटा वैल्यू हे जो केते ना 2y हे जो डायरेक्टली आंसर लिखु छु 2y into dx minus dv by dx केते हे जो ना dv by dx हे जो minus 2x. सो माइनस माइनस ये गेला प्लस 2x into dy. ओके. सो ये हे गेला फंक्शन. देन आको हमें कोन करिवा सॉल्व करिवा. सो आको सॉल्व करिवा कोन ना एटा प्रथमे को गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन भलिया देखा होची जोटार फॉर्म हैला m dx plus n dy ए भलिया फॉर्म रे अछि. सो ए भलिया फॉर्म रे थिले एठी हमकु ए भलिया आगे सॉल्व करा जाय जे सो व्हिच इज सॉल्व u is equal to इंटीग्रेशन नै गेले.
सो इज इक्वल टू डी यू रो इंटीग्रेशन सो ये जो इंटीग्रेशन 2y into dx plus integration 2x into dy so এটা তার ফার্স্ট অর্ডার ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেল সো সো এটি কোন হবো যেহেতু এটা which is the in the form of m dx plus n dy partial differential equation so এটা সেই ভলে সলভ हुए ফার্স্ট পার্টটা কোন हुए না এটা তাহলে সলভ हुए y treated for this one dx part তাহলে সলভ हुए y treated as constant but যেতବେଳେ a part রে কনসিডর করা যায় সো এইটার কোন हुए না a টর্মটা যেতବେଳେ আমি ইন্টিগ্রেট করন্তি ইট ইজ free for x part सो x पार्ट रो जे हमें फ्री करिया मींस से टोटल वैल्यूटा कटे दो त माने एठी x वैल्यू जगह 0 पुट करियला माने f कर पार्टटा टोटल वैनिश हे गला सो ओनली ए कर पार्टटा एग्जिस्ट कला सो एटा लिखि दे परिया 2y dx रो इंटीग्रेशन x ओके सो प्लस c जेतु हम गोटे कांस्टेंट ये करछन बस सिंपली हमें जे देखिबा सो u हे गला केते 2xy क्लियर सो u हे गला 2xy सो व्हिच इज ऑप्शन c right so option c is the correct answer so the next question ku jiba so next question is 39 agent value of Hermitian operator so the Hermitian operator ro so agent value always positive or you can say always real number so no, no anti Hermitian no he jaye complex number or zero re ruhe clear so next question jiya so which of the following component is most difficult to fabricate on the integrated circuit so anka vitru koda most difficult हुए ये fabricate करिया पे ना एटा हुए इंडिकेटर टा काहे की इंडक्टर कारण एटा गोटे बहुत लार्ज एरिया दरकार हुए आको आमे को फास्ट सब fabricate करिया पे लार्ज एरिया दरकार so which is practically impossible इते बड़ा लार्ज एरिया टे हमको क्रिएट करिया पे ऑल्सो इटा कोन होय ना बहुत गुडे कैपेसिटेंस यूज करे और ईडी करंट प्रोड्यूस करे कैपेसिटेंस बहुत ईडी करंट प्रोड्यूस करे सो जोटा कि हमको इम्पॉसिबल हुए कंडक्ट करिया पे सो इटा हबो ऑप्शन सो इटा भारी कष्ट हुए टू जनरेट करिया पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 सॉरी 41 सो 41 कहला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन हैज सो हमें काइनेटिक एनर्जी कौन करिवा ना काइनेटिक एनर्जी रे हमें जानि छथि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर जार वेलोसिटी जेते अधिक थिबो सेटा हिसाब रे ये रहइबो सो प्लैनेट जेतो बळे सन रो एटा तने सन रहिला द प्लैनेट जेतो बळे जेते क्लोज सरफेस रे थिबो जेते पाखा पे की थिबो क्लोज थिबो जेतो बळे क्लोज थिबो सेमानक भितरे कोन बना जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन करबा ग्रेविटेशनल फोर्स रहिला एटा बहुत हाई रहइबो सो जदि ग्रेविटेशनल फोर्स टा बहुत हाई रहिला ताले कोन हबो ऑटोमेटिकली स्पीड भी हाई रहिबो सो स्पीड हाई रहिले काइनेटिक एनर्जी कोन हबो हाई रहिबो सो क्लोजर द planet high the gravitational force between them and high the speed of the planet so जते हमें दूर को जिबा कोन हबो ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करि जिवो स्पीड कमी जिवो सो दूर को गले कमी जिवो सो एटा हेबो नाही सो क्लोज रहिले मैक्सिमम केस रे हबो सेनु एटा हबो ऑप्शन सो एटा ही करेक्ट आंसर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आउ कोन कहिला द सेम वैल्यू एट द पॉइंट अराउंड द सन सेम वैल्यू तो हबनी सब जगह तो एटा भी कटि गेला सो आउट कहिला मिनिमम वैल्यू व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन आर इक्वल इन सेमी मेजर ये मध्ये पॉसिबल नुय ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला 42 a plain and monochromatic electromagnetic wave frequency f enters a conducting medium of electric conductivity sigma the skin depth of the conductive medium is proportional to skin depth kete हुए ना skin depth directly मन रखियो एटा ऑप्शन डी so skin depth is equal to 1 by sigma into f root over so एटा ऑप्शन डी 42 ऑप्शन डी so next question जिवा 43 so ये पहिला susceptibility and electropermeability मध्ये रिलेशन केते हबो ना ये मध्ये डायरेक्टली मन रखियो आर फार्मूला er equal to 1 plus j so
permittivity relative permittivity equal to 1 plus electric susceptibility. तापर जे next question 44 कहला classical statistical system Gibbs paradox is associated. Gibbs paradox is always associated with additive nature of entropy. So which is option B. So मन रखिबा Gibbs paradox is associated with additive property of entropy. Next question कहला the Davison-Germer experiment provides the experimental confirmation of এটা মনে ରଖିଦବା डायरेक्टली थ्योरी पार्ट डी बगली वेवलेंथ जोटा हमर बाहर थिला तार एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेशन के देइतिले बा प्रूफ के देइतिले ना डेविसन जर्मन जो तांकर एक्सपेरिमेंट करथिले सेटारु हमर प्रूफ देइतिले. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला a point charge q is placed a distance r from an infinite ground. So गोटे infinite ground नै जीवा इटा गोटे infinite ground हे गला. Okay, so grounded conducting plane. If charge and conducting plane in air permittivity epsilon naught, the electrostatic energy गोटे q charge अछि ऊपर एइ गोटे q charge अछि q charge, so which is at a distance r. So this r distance रे रहिला. Okay, so ताले तार गोटे image create होबो जोटा कि lower part रे सही आर डिस्टेंस रे परिणत क्रिएट हो माइनस क्यू चार्ज. सो हमको पचारछि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रो फार्मूला हे गेला U इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R. सिंपली द डिस्टेंस. सो एठी केते हे जो ना टोटल डिस्टेंस हे गेला ये आर टोटल डिस्टेंस हे गेला 2r. सो एटा हम एठी लिख दे पारे 1 by 4 pi epsilon naught Q जगह रे पके दवा Q Q2 जगह रे पके दवा माइनस Q जोटा इमेज चार्ज क्रिएट है. सो डिस्टेंस हे गेला 2r. सो एटा जदि हम सॉल्व करिया माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 2 4 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. सो q स्क्वायर 8 पाई r एप्सिलॉन नॉट. सो एटा हला ऑप्शन डी. सो नेगेटिव टा मिसुनी सेटा बाय मिस्टेकली मते लागु कोठी गोटे मिस्टेक रहि जाय क्वेश्चन. सो एटा ऑप्शन डी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. So question number 47 Clausius-Clapeyron equation is applicable. इटा डायरेक्टली मन रखि दबा. सो ये हला 47 ना आंसर हे गेला ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. सो इटा मन रखिबा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज associated with or application of this one. Okay, so next question जीवा 48 पचारिला. So which of the following represents beta function AB. So beta function AB को हमें यदि लिखिबा so beta function AB so ये ही जो gamma A into gamma B divided by gamma A plus B. So इटा गला तार फार्मूला. So आउ गोटे फार्मूला जानि चंदी gamma रो. So gamma जदि एटा हमें एभला लिखिबा x plus 1 so ये ही जो कोन ना x into gamma x. सो ए फंक्शन को यूज करके हम ऑप्शन ए बी रु ट्राई करिवा नै कि मिसेबा पाई. सो फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करिवा ए को ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए देला बीटा ए प्लस बी प्लस 1. सो बीटा ए बी प्लस 1. सो एटा हम गामा फंक्शन हिसाब रे जदि मु लिखिबी एटा हे जो केते गामा फर्स्ट फंक्शन इनटू गामा सेकंड फंक्शन बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा a plus second function b plus 1 এটা গোটে বলি কনসিডার করিবি. ওকে নেক্সট আমি এই যে ফর্মুলাটাকে অ্যাপ্লাই করিবা কোন জায়গায় না এইটি আউ লোয়ার পার্ট কাইনা আ সহিত ইকুয়াল করিবা. সো এটাকে মু যদি ইকুয়াল করিবি ফার্স্ট পার্টটা তো গামা ইনটু a হেই যিবো. সো এটা কোন হেই যিবো না এইভলা ফর্মুলা পকেইলে এটা হেই যিবো b ইনটু গামা b. ओके सो लोअर पार्ट टा मते हम कंसीडर करिमु ए दिटा गोटे फंक्शन 1 अधिक अछि. सो ये हे जो a plus b होल इनटू गामा a plus b. सो एटा जदि मु भलसे लिखि देबी ये हे गला केते ना b डिवाइडेड बाय a plus b होल इनटू गामा a इनटू गामा b डिवाइडेड बाय गामा a plus b. So which is equal to first option जोटा हमें नहीं थिले first बीटा a b सहित समान. सेटा को एबला लिखि देम b by a plus b is equal into बीटा a b.
सो मते पचारिछि बीटा ए बी रे वैल्यू बाहर करिया पे सो बीटा ए बी रे वैल्यू बाहर कले एटाको राइट साइड की दे दवा सो बीटा ए बी इज इक्वल टू सो एटा सेकरु पळेले हे जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी सो इनटू बीटा ए बी प्लस 1 सो एटा हमको देखिले मैच कर जाउची ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो you can check by taking all the options B, C, D. So you will see that these options are incorrect. Okay. So your next question 49 को. So 49 कहला suppose A, B are two commutating operator. So commutating means A, B is equal to BA. Commutating operator means Hermitian कहला कौन ना ता adjoint टा same हो means A रा यदि मो adjoint नेबी so ये है जो सही A भी so हेले which of the following is true so एटा को यदि हमें देखिवा एजेन वैल्यू ऑफ A are also एजेन वैल्यू ऑफ B एटा भूल हेजबो काना एजेन वैल्यू गुडा डिफरेंट हे जाय वैरी करि जाय so ये incorrect एजेन फंक्शन ऑफ A is also एजेन फंक्शन ऑफ या फंक्शन सेम हेजो so option B is the correct answer so don't require to read C and D so हमारे टी B टा ही correct answer हे गला okay so next जीवा 50 को number question number 50 a shift register which is capable of shifting data left right and parallel is called so जोटा left right and parallel तीन डायरेक्शन को करंट पठे पारियो ताको हमें कोनती universal shift register so option D is the correct answer so ट्राई स्टेट रे कोन हुए ना एटा खाली हाई रु लो को जाय सो फास्ट दे हमें कंसीडर करबा एटा हाई टू लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज रु लो वोल्टेज को शिफ्ट करे सो नो मूवमेंट ऑफ पैरेलल सो टर्न अराउंड रे देजी देखिबा ये कोन हुए ना ये शिफ्ट हुए बोथ द डायरेक्शन ओके बोथ द डायरेक्शन हुए बट पैरेलली हुए ना बोथ लेफ्ट एंड राइट को जीवो बट नॉट पैरेलल and genuinely we did not use it commonly this is not used so ये मध्य गला so conversation shift register कौन हो ना conversation कौन ना both serial and parallel ले जीवो but in one direction not both the direction serially भी जीवो serial and parallel direction ले जीवो but only one direction means जे जी भला जाउथबो तो straight जीवो so बैक करिवो नाही so not both direction so सेति पय एटा हे परिवो नाही not both direction so सेति पय ये गला wrong so option D is the correct universal shift register सेटा डायरेक्टली भी मन रखिया हो थ्योरी पार्ट so जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 so पचारला the potential energy of one dimensional harmonic equilibrium V1 if its displacement position is x1 and the potential becomes V2 okay so जेतबेले V1 थिला so आमे तार फार्मूला पुट कर दवा फार्मूला आइ जो केते ना 1/2 k x1 स्क्वायर ठीक अछि k is the wave constant so जेतबेले V2 हैला सेति काले डिस्टेंस अछि केते ना k2 1/2 k x2 so हमहु कोन करिवार अछि ना दीटा अंक जेतबेले मिसी गे जो एटा आ गोटे पेज रे करिवा जगह होबनी सो एठी सॉल्व कर दवा सो ये हे जो केते ना सो v1 वैल्यू दे देला हाफ k x1 स्क्वायर सो इनटू v2 रे वैल्यू दे देला केते ना हाफ k x2 रो स्क्वायर सो k1 इनटू x2 रो स्क्वायर सो एबे पचारि छि हमकु v बाहर करिवा व्हेन टोटल डिस्टेंस केते हिजन x1 प्लस x2 सो जेतु सेम मटेरियल बा सेम स्प्रिंग सो k तो कांस्टेंट रहिला k लिखि देली सो डिस्टेंस हे गेला केते मोर एटी x1 प्लस x2 रो होल स्क्वायर सो एटा a प्लस b रो होल स्क्वायर हिसाब रे भांगी दवा एटा गेला 1/2 इनटू k होल इनटू x1 रो स्क्वायर प्लस x2 रो स्क्वायर प्लस 2x1 इनटू x2 सो एटा को हमें इंडिविजुअली यदि हमें मल्टीप्लाई कर दवा ये गेला हाफ k x1 रो स्क्वायर प्लस हाफ k x2 रो स्क्वायर सो प्लस हाफ एंड 2 कैंसिल हे गेला ये गेला k x1 इनटू x2 सो ये गेला v1 ये गेला v2 एटा को हमें कोन करिवा ना भांगीवा सो लेट को करला बोथ रो स्क्वायर नै कि रूट ओवर नै गेली x1 इनटू x2 रो होल स्क्वायर नै कि रूट ओवर नै गेली सो एटा को नै कि एटा को भांगी देबे ए भलिया आबरे v1 प्लस v2 सो ओके प्लस सो हमको ए फॉर्म रे आनियार अछि सो मु कोन करला
गोटे 1/2 इंटू के गोटे के आनली के जेहेतु स्क्वायर नहीं के रो भी स्क्वायर हम सो x1 रो स्क्वायर इंटू 1/2 के x2 रो स्क्वायर हे गला 1/2 1/2 1/4 गोटे मल्टीप्लाई करा है सो गोटे 4 मल्टीप्लाई कर देली सो एटा को जदि हमें सॉल्व कर दबा सो ये हे गला v1 प्लस v2 सो 2 रो रूट ओवर एक पळे आसीबो 2 ए रूट ओवर ऑफ v1 into v2 सो एबे चेक कर दा को ऑप्शन टा मैच करूची सो ऑप्शन नंबर डी सो 51 ऑप्शन नंबर डी सो नेक्स्ट क्वेश्चन जा 52 सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the boundary condition at electric displacement D and electric field E at interference of two homogeneous isotropic linear dielectric medium R. So এটা মনে রাখিবা যেতবেলে মিডিয়াম দুইটা বা আমার বাউন্ডারি কন্ডিশন কোন হবো না যেটা ই রইলা ই র ট্যানজেনশিয়াল কম্পোনেন্ট সো ট্যানজেনশিয়াল কম্পোনেন্ট ই कौन हम ना कंटिन्यूअस हम सो ई ट्रांजिशनल कंपोनेंट ऑफ ई इज कंटिन्यूअस सो जदि कंटिन्यूअस हला ई लिखि परिबा 1 टेंजेंशियल इक्वल टू E2 टेंजेंशियल सो ई रो टेंजेंशियल कंपोनेंट दिटांग इक्वल हम सो नॉर्मल कंपोनेंट कौन हम ना डी रो नॉर्मल कंपोनेंट सो हमें लिखि परिया नॉर्मल component of D vector is continuous also continuous केमती हम ना आम एभला लिखि परिबा D1 normal sorry D2 normal minus D1 normal equal to sigma बा फ्री चार्ज डेंसिटी जदि मीडियम रे फ्री चार्ज डेंसिटी नथिबो बा फ्री फ्रॉम फ्री चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा एफ केते हेजो ना 0 हेजो तो सिग्मा एफ 0 हे गला ताले वैल्यूटा केते हेजो ना D2 नॉर्मल इक्वल टू D1 नॉर्मल सहित समान हे गला सो एटा का सहित होबो ना नॉर्मल ऑप्शन देखिबा एबे चूज करियो और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E ना भूल होबो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D and tangential component of E is continuous so option B. So option B is the correct answer. Yeah, 52, 53 jiva. So 53 saying A, B are agent coefficient of spontaneous emission and stimulated transition respectively. Which of the following corresponds spontaneous emission of photon? So এটা যদি A, B spontaneous out stimulate transition show करे so এটা মনে রাখিবা so A 21 ହେଇଯିବ କଣ ନା spontaneous emission no coefficient from state energy level 2 to 1 okay so एटा है जो आंसर A21 क्लियर so आमे जे आउ टिके भी लिखि दे परिबा so B12 केते हबो ना B12 हे गला केते ना ये जो stimulated transition from lower state to 1 ये जो stimulated transition 1 to 2 B21 केते हबो B21 हबो stimulated transition from 2 to 1 so मते एटी कोन पचारिछि स्पोंटानियस एमिशन नो कोएफिशिएंट पचारिछि सो स्पोंटानियस एमिशन नो कोएफिशिएंट पचारले एटा है जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 53 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो 54 कहले बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ने गिवन स्टेट केते ना मल्टीपल पार्टिसिपेट अलाउ करे सो मोजी मल्टीपल पार्टिसिपेट अलाउ करे सो ये जो ए नंबर ऑफ पार्टिकल ऑप्शन सी सो बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कोन करे ना मल्टीपल पार्टिकल अलाउ करे so option C is the correct answer so next question ja 55 non existence of electron inside a atomic nucleus can by using এটা আমি কোন করিবা না হিজনবর্গ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिसाब रे प्रूव करंती जेमति मन अछि a del x dot del p is greater than equal to h squared by 2 pi बा जोटा के हम लिखिबा h by 4 pi सहित इक्वल हुए तो del x केते हबो
ना आटम रो न्यूक्लियस रो साइज हे जाय केते ना आटम रो न्यूक्लियस साइज हैला 10 टू द पावर -15 मीटर सो अगेन डेल पी टा को भांगी दबा केते ना डेल पी इक्वल टू मास इनटू डेल बी सो एटा को हम सब गुडा पुट कर दबा सो एटी पुट कर देले एटा एक्सट्रीम कंडीशन नै जिबा सो हम डायरेक्टली मु लिखु जी डेल v केते हे जिवो ना h बाय 4 पाई into del x into mass so इति mass of electron पकेबा काना electron existence पके जोटा कि हमर mass of electron केते ना 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and एटा तो m दे देजी h रो वैल्यू तो 6.62 into 10 to the power minus 32 सो एटा गोटे कांस्टेंट तार वैल्यू पुट कला सब कैलकुलेट कर देले सो जार वैल्यू मिली गला नियरली इक्वल टू मिले 5.8 into 10 to the power 10 meter per second so which is practically impossible because आमे जानि चंती सबडा हाई स्पीड हे गला एनवायरनमेंट रे जोटा लाइट रो स्पीड जोटा c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second सो ए आठ ये बहुत अधिक होची सोटा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सो एटा का थ्रू रे हम प्रूव करछन ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सहित सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला 56 क्लोजली wounded solid node of n tons of wire carrying current I in air okay so solenoid ର magnetic magnitude of magnetic induction ର formula केते हे जो ना mu naught small n into I small n कोन ना number of turn per unit length सो एटा को हमें लिखि परिबा एटा को टिके भांगी दवा यूनिट लेंथ टा को हिसाब रे भांगीबा एटा mu 0 सो टोटल नंबर ऑफ लेंथ बा टर्न बाय टोटल लेंथ एन एल इनटू आई सो एटा जे मल्टीप्लाई करिबा ये हे गेला mu 0 n i बाय l सेटा कहा सहित समान होची mu 0 n i बाय l सो व्हिच इज ऑप्शन सी सो 57 सॉरी 56 इज ऑप्शन सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन जे 57 सो 57 कहिला सो okay so 57 को c1 c2 c3 rms speed mean speed and most probable speed okay so c1 rms speed केते हो ना c1 नो डायरेक्ट वैल्यू मन रहछि 3 kt by m so जोटा rms बोली रहिला जोटा c2 mean speed रहिला so mean speed केते होबो c2 एटा हम डायरेक्टली मन रखिबा 8 kt by pi m into c3 केते होबो जोटा most probable speed होबो 2 kt by m so एटा देखि हम एठू देखिबा कैंसिल हो गेले आटा तार रेशियो हो जो √3 to 8 by pi √4 is to √2 so 57 option b so next question jiwa Laplace equation वा ट्रांसफॉर्म of sin of at so देखिए f of t गोटे फंक्शन रहिला तार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन केते हुए ना f of s इक्वल टू गोटे फंक्शन रहिला f of t आर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखिबा सो एटा ट्रांसफॉर्मेशन देखिले हम तार फार्मूला डायरेक्टली मन रखन सो यार फार्मूला है जो इंटीग्रेशन 0 to minus in sorry plus infinity okay e to the power minus s t into f of t into dt सो जेतले f of t जगह हमें कोन करिया ना sin of t नवा बा sin फंक्शन नवा sin a t नवा सो एटा डायरेक्टली मन रखि दवा एटार फार्मूला ला a by a square plus s square एटा डायरेक्टली मन रखिबा a by a square plus x square clear so next question जिवा wave function of an one dimensional harmonic oscillator डायमेंशन केते हो wave function जोटा कि रहला so जदि हम नॉर्मल कंडीशन नबा बा नॉर्मल ईयर नबा so wave function केते हे जिवो so for normal condition wave function minus infinity to infinity psi of x रो whole square into dx is equal to 1 हबो so dx टा कोन गोटे शॉर्ट लेंथ गोटे बड़ ईयर छोटिया पार्ट नियंती बाटा लेंथ सहित समान हबो ताले डायमेंशन ऑफ dx केते हे गला ना l लेंथ जेतु l सहित समान हे जो ताले psi of x रो स्क्वायर जदि हम कंसीडर कर ये तो इंटीग्रेशन तो डायमेंशन लेस ये तो गोटे वैल्यू टू बा कांस्टेंट बा गोटे sin टी सेटा डायमेंशन लेस ये जो l पळेबो 1 by l हे जो बट एटा हे गेल l टू द पावर -1 ताले psi of x रो केते हे जो ना l टू द पावर -1 by 2 which is l to the power -0.5 सहित समान so -0.5 means एटा ऑप्शन डी so 59 option D next question कहला which of the following is universal gate so NOR and NAND is universal gate because we can form any type of gate by using this NOR and NAND gate clear so ए वीडियो रे
क्वेश्चन नंबर 60 पर्यंत रही। नेक्स्ट आउ 20 क्वेश्चन बाकी रही गला जोटा कि नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीट कर दो। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जिवो। सो थैंक यू। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like this video. Thank you.